All right, viewers, lots of news coming in. The Nepal Prime Minister all set to leave Nepal. Are we seeing the playbook of Bangladesh also play out in the country of Nepal? Prime Minister KP Sharma Oli preparing to leave for Dubai. Information has been received from sources close to the Prime Minister. Are we now staring at a regime change, considering going to Dubai in the name of treatment? Nepal's private airline, Himalaya Airlines, has been asked to be on standby. After ministers quit one after the other, the Prime Minister has given the acting responsibility to his close aide. Oli is preparing to go to Dubai, giving the active responsibility to his deputy Prime Minister. Viewers, what we clearly are staring at right now, where Nepal is concerned, is a regime change. It all started, at least where the protests on the streets were concerned, where thousands of the youth, Gen Z, poured out protesting what they said was a social media ban. The government at that time had said that this was a regulatory issue. That's why platforms like Facebook, Instagram, Twitter, X could not, were banned in the country because they had not registered with the ministry. But having said that, the heat was enough for the government to buckle down and lift the ban late last night. But things have not stemmed, which goes on to suggest what many are anticipating, that there was a larger plot in the backdrop, where corruption, unemployment, the ban on social media, of course, was the trigger. All have snowballed into something which is now pushing for a regime change in this country of Nepal. Something which eerily also reminds us on what happened in Bangladesh and then earlier on in Sri Lanka or other neighboring countries, where in Bangladesh it was a protest that was largely helmed in by nobody else but the students on ground, and ultimately resulted in a regime change. Similarly, the protest of the youth in Sri Lanka resulted in a regime change. Are we looking at the same where Nepal is concerned? I want to cut across to my colleague Om Murthy, who's joining us with the latest from Kathmandu. Om, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ओली दुबई जा सकते हैं. ओम मूर्ति, आपको आवाज आ रही है? All right, we don't have, okay, we have Mr. Om Murthy. All right, we're going to get you the latest coming in. We're going to get you reactions from ground. Om Murthy, a social media influencer, is right now with us. Om Murthy ji, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. ओम मूर्ति जी, जो सोशल मीडिया का बैन सरकार ने, जो नेपाल की सरकार है, देर रात हटा दिया था, अभी भी प्रोटेस्ट जारी हैं. अभी क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं ओम मूर्ति जी? We seem to have lost our connection. We're trying to get in as much information for our viewers from Nepal. The latest that, of course, is coming in is Prime Minister of Nepal is looking to possibly leave Nepal. Is KP Sharma Oli looking to flee to Dubai? Information received from sources close to the Prime Minister's office suggest that he's entrusted all responsibilities to his deputy Prime Minister. Nepal's private airline, Himalaya Airlines, have been on standby after ministers have quit one by one. The PM has given the acting responsibility to his close aide, who is the Deputy Prime Minister. Having said that, things on ground coming to a head, protests still not abating, even though despite the Nepal government lifting the ban on social media. These were the latest reports that have been filed by my colleagues. दिखाई दे रहे हैं. All right, viewers, we're going to try and cut across to those reports that have been filed by India Today reporters who have been on ground once again to apprise our viewers of the latest situation on ground. Things have come to a head. The protests continue, all of it in the wake of the authorities yesterday, the army opening fire on protesters. 20 youth have been killed, at least
in the action by the police and the army. Let's dip into all reactions coming in. वो एक पुलिस थे, वो मेरा पीछा कर रहा था, वो मेरे खेद रहा था और थोड़ा आगे से आगे चल रहा था मैं। वो दूसरा पुलिस थे, वो बंदूक ताक रहा था, मैं बंदूक उसको कैच कर रहा। वो दूसरा पुलिस आके खुद से आके तो बंदूक के नाल से यहाँ मार दिया। बहुत भ्रष्टाचार है, हमारा युवा से रोजगार नहीं मिल रहा है, हर एक चीज का टैक्स देना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है हमारा पास। कुछ कमाओ उनका टैक्स तिरो, हर एक सामान महंगी है। यहाँ नेपाल में रहने कौन वातावरण ही नहीं है। यहाँ सब ऐसा देश बना दिया कि सब बेकारी बना दिया है नेपाली जनता से। हमें हमारे देश के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि हमारे पुश्ता लोग हमारे जैसे दुख नहीं पाना चाहिए। हाँ, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 18 साल है अभी। ये पॉलिटिकल ये है ना, वो बहुत सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए हमको इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आ रही है यहाँ पे। हमें ये देश के लिए आवाज उठाना है, तो हमें हमारा जान भी त्यागने के लिए तैयार है। अब हिजो जो युवाहरूको मृत्यु हो गया, जिनका मतलब हत्या किया, उसको विरोध में तो आएगा ही आएगा। सबको तो अब तो सबको हो गया है, सभी वर्गों के लोग कल उनका था, अब सबका हो गया ये तो जी। अब नेपाल का प्रोटेस्ट हो गया। नेपाल का प्रोटेस्ट चाहिए अब। आज जो है ना, अभी बहुत आएगा। हाँ, क्योंकि जनहत्या हो रहा है ना, जनहत्या से अब यो आक्रोश जो भी होते हैं, हम कल नहीं निकलते, आज आए हैं। ये ऐसे सब लोग आ रहे हैं। सरकारले यो सोशल मिडियामा प्रतिबन्ध लगायो, हटायो, त्यो मात्रै होइन। यो नेपाल सरकार चाहिँ खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ भ्रष्ट सरकार हो। यसले देशमा सुशासन र राम्रो स्थिति भन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्यो। 1 साल होगा, 2 साल होगा, लगभग 14 से 15 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन डेवलपमेंट नाम पर जीरो हुआ। अभी तक कुछ हुआ है, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। आप लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं? किसको देश छोड़ने की मांग कर रहे हैं? मेन तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ना चाहिए कि ये सलाह इसको तरीपार कर देना, कभी भाई एंट्री नहीं देना चाहिए। हम लोग अब डरने का जरूरी नहीं है, पुलिस आए जो भी आओ, हम लोग मरने के भी तैयार है, लेकिन हम लोग को सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसे भी ये प्रधानमंत्री का राजीनामा देना चाहिए। ये युवा का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश परिवर्तन करने के लिए ये आंदोलन है। हम पुलिस से इतना अनुरोध कर रहे हैं, आपका भी बाल बच्चा है ना, हम आपके भी लड़ रहे हैं, आपके भी। Also coming in, homes of Nepal leaders have been attacked by protesters. Nepal ruling party Neta Sher Bahadur's home has been torched. Dozens of vehicles at Bahadur's homes have also been torched. Protesters have broken gates of ex-Nepal Prime Minister Prachanda's house as well. Gen Z protests turning extremely violent. Prachanda's residence vandalized. Agitation has intensified on its second day despite curfew orders imposed across all 3 districts of Kathmandu Valley. Defying restrictions, protesters have gathered at several junctions, chanting slogans. Amidst the chaos, demonstrators have begun targeting the homes of political leaders. A group of protesters has reached the Khumaltar residence of Maoist Centre chairperson Pushpa Kamal Dahal Prachanda, damaging the main gate and attempting to enter the premises. What you are clearly looking, viewers, is exactly the playbook of what had happened in Bangladesh, in Sri Lanka earlier. The social media ban has now been lifted, yet the protests are only peaking. Is a regime change in order? Word coming in that the Prime Minister of Nepal is looking to flee to Dubai. Let's try and get in reactions. I have Om Murthy, social activist, who's part of the agitation. It started off as something organic, where lots of youth from different spheres and walks of life joining in. There is no one leader to this agitation. That makes it all the more difficult to speak, negotiate, and start a dialogue where the government is concerned. Om Murthy, social activist, is finally with us right now. Om Murthy ji, अभी क्या हालात हैं नेपाल में? जो सोशल मीडिया बैन है उसको लिफ्ट कर दिया गया है, पर अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, क्यों? All right, there's an audio problem. We're going to try and connect once again, but let's dip into all reactions that have been filed by our reporters on ground. Viewers, what I can tell you right now is that things have come to a head in Nepal, Kathmandu, despite curfew
being imposed despite the social media ban being lifted, because that was what was initially being protested by the youth there. But protest now turning into something far more grave, where the protesters are pushing for a regime change. The Prime Minister of Kathmandu has entrusted his Deputy Prime Minister with the responsibility, and in all probability would be looking to leave Nepal, or rather flee Nepal to Dubai. Homes of leaders are being torched across, been broken into, complete anarchy and violence being witnessed across the country of Nepal, erupting in flames, especially nerve centers like Kathmandu. जो हिंसा हुई, जिसमें लोगों की मौत हुई, उसके बाद से नेपाली समुदाय में एक बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। जनजी आंदोलन अब एक बड़ा रूप ले रहा है। मैं आपको तस्वीरें में दिखाता हूं। जो पार्लियामेंट है उसके ठीक बाहर यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे। सुबह ये प्रदर्शनकारी जो इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं संसद भवन के ठीक बाहर थे, लेकिन फिर और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रदर्शनकारियों को ठेला गया है। 8:30 बजे सुबह से काठमांडू में एक बार फिर से प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि ओली सरकार को वापस जाना होगा, गद्दी छोड़ना होगा। और धीरे धीरे देखिए कैसे संसद भवन के सामने वाली सड़क को पुलिस अपने कब्जे में ले रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग बनी हुई है कि ओली सरकार को जाना होगा और युवाओं के हाथ में नेतृत्व देना होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अब सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं है, बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म के बारे में है।